Hi everyone, I hope you guys are doing great. Okay, let's move on to the question. It's basically source A for question number 1, and the paper is October November 2023, variant 33. Okay, let's quickly start the question. The statement of financial position of the KPLC at 30th June 2022 showed a total carrying value of the property, plant, and equipment of 620,000. This consisted of the premises, machinery and motor vehicle. So भाई हमारे पास जो टोटल वैल्यू है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की वो 620,000 है, जिसका ब्रेकअप क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेमिसेस नंबर 1 एंड देन मशीनरी एंड देन मोटर व्हीकल. सो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी अ डेप्रिसिएशन स्केड्यूल 1 क्वेश्चन. यहाँ पे हमने एएस में इस तरह का किया था, डेप्रिसिएशन के स्केड्यूल्स हम लोग बनाते थे. सेम गोज फॉर द A2. So, as a part of the preparation of the financial statements at 30th June 2023, the company needed to prepare the schedule of the non-current asset, as I have just said, right? The following information is available. So, let's quickly move on and see what do we have to do in part A first. So, part A is simple. That is, complete the following table by calculating the required values for each category of the property, plant and equipment at 30th June 2022. तो मतलब यहाँ पे ये बेटा कि this is our year end, 30th June 2022. Space हमारे पास है, we just have to fill in the figures. Now let's start with the premises first. So if you look at the details of the premises, it says the premises had been bought on the 1st of July 2007 for 480,000. At that time, the cost was considered to be 50% for the land and 50% for the building. So that definitely means कि आपके पास यहाँ पे premises की अगर total हमारे पास cost आई है, that is like 480,000, तो उसका breakup हमारे पास क्या है? 50% land and 50% हमारे पास building. It's the policy of the company to depreciate the buildings at the rate of 2% per annum using the straight line method. Then it says on 1st July 2022, the premises was revalued. The valuation was 790,000, with 390,000 of this being the value of the land. It was decided to continue to calculate the depreciation on buildings at the rate of 2% per annum. So here we are provided with many things, like we have been provided with the rate as well. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास it's a common sense thing. We don't have to calculate the depreciation on land. As you guys know कि land पे depreciation नहीं होती, land पे depreciation नहीं charge होती. तो अगर land पे depreciation हमारे पास नहीं charge होती तो फिर हम इसको क्या करेंगे? Definitely we have to subtract this, or we have to divide this by 2. So if we are having 480,000, so let's make some sense. 480,000, तो बेटा 480,000 को हम यहाँ पे 2 में स्प्लिट अप करेंगे. वाई वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन टेक अ 50%, या इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी प्योरली होली एंड सोलली किस चीज की वैल्यू आएगी? वो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू आएगी. तो बेटा बिल्डिंग की जो वैल्यू आ रही है दैट इज लाइक 240,000. तो 240,000 इज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. डेफिनेटली दैट्स गोना बी डेप्रिसिएटेड एट 2% पर एनम. सो बेटा इसको हम 2% से मल्टीप्लाई करते हैं कि देखते हैं हमारे पास 2% इसका कितना आ रहा है. सो इफ यू डू दैट, 240,000 multiply by 2%, that's going to be 4,800. तो बेटा आपके पास पर एनम डेप्रिसिएशन आ रही है 4,800, right? So let's calculate the number of years. If we calculate from 1st July 2007 towards the ending, which is 30th June 2022, so बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो total number of years till date जो हमारे पास बनते हैं from 2007 till 2022, that is basically आपके 15 years. So we just have to multiply it with 15. So 4,800 multiplied with 15, you're gonna get 72,000. तो बेटा ये जो आपके पास 72,000 है, that is basically what? That is basically your accumulated depreciation. That is total depreciation. So बेटा आपके पास accumulated depreciation यहाँ पे आ गई है, which is like 72,000. That was easy. Cost हमारे पास already given थी. Cost was 480,000. So 480,000 minus 72,000, that's going to give you what? A carrying value of 408,000, right? So we are done with the first bit of it. Okay. नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, दिस पार्ट ऑफ इट विल बी डीलिंग इट लेटर जब हम स्केड्यूल बनाएंगे. राइट नाउ वी आर नॉट मेकिंग द स्केड्यूल, वी आर जस्ट फाइंडिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग वैल्यू. इसके बाद व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द स्पेस इन पार्ट बी. हियर वी आर गोइंग टू मेक द स्केड्यूल फॉर इट. सो मशीनरी पे जरा क्विकली जाते हैं. हमारे पास मशीनरी में क्या कहता है? इट सेज ऑन 1st July 2022 द कंपनी प्रिपेयर्ड फॉर the company operated 4 machines. These had all been bought at the same price. This is a very important thing. All the machines have the same price. Machine 1 and 2 were fully depreciated.
सो ऑब्वियसली आपने 4 मशीन्स ली हैं, 2 मशीन उसमें फुली डेप्रिसिएटेड है. बाय 30th June 2022 machine 3 had been bought on 1st July 2014, on 30th June 2022 and had a carrying value of 12,000. अच्छा, यहाँ पे आपको ये बताया गया कि ये आपने 2014 में ली है एंड 2014 से लेके 2022, सो हाउ मेनी इयर्स हैव बीन पास्ड. तो बेटा यहाँ पे आपके 8 इयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं मशीनरी में, मशीन 3 में, राइट. सो मशीन 3 आपके पास 8 ईयर से पड़ी हुई है. इफ यू लुक एट मशीन 4, सो मशीन 4 हैड बीन बॉट ऑन द 1st of July 2016 and on 30th June 2022 had a carrying value of 24,000. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 2016 से 2022 तक ये मशीन हमारे पास कितने ईयर्स के लिए पड़ी थी? दैट इज 6 ईयर्स. तो 6 ईयर्स के लिए एक मशीन थी एंड हमारे पास 8 ईयर्स के लिए मशीन 3 थी. सो अगर मैं मशीन 3 और 4 की जरा यहाँ पे कहानी देखूं, आई एम बी यूजिंग दिस स्पेस. प्रेमिसेस को तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, उसमें एज सच वर्किंग कुछ थी नहीं, जो वर्किंग थी वो मैंने ऊपर कर ली. आई एम गोना रीराइट द वर्किंग फॉर इट फॉर द प्रेमिसेस, ताकि आपको याद रहे. प्रेमिसेस का इट वाज 480,000. 480,000 को हमने 2 पे डिवाइड किया. द value of the premises gave us how much? That is like 240,000. फिर 240,000 का हमने यहाँ पे इसका 2% फाइंड किया, which made us to have a depreciation of 4,800. I'm just rewriting the whole thing, right? Multiplied with 15, because 15 years थे तो हमारे पास 72,000 आ गई. So that was a repetition, मैंने यहाँ पे working में लिख दिया. Then moving on towards the machinery. Machinery की जो है हमने एक मरतबा देख ली थी. Machinery 1 and 2 are fully depreciated. So we are left with only machinery 3 and machinery 4. And we have been provided the carrying values of machinery 3, which was 12,000, and the carrying value of machinery 4, which is 24,000. And the company depreciates its machine at the rate of 10% per annum using the straight line method. It provides a full year depreciation in the year of acquisition and none in the year of disposal. During the year ended 30th June 2023, the 2 fully depreciated machines were sold at a profit of 36,000. 2 new machines were bought at a cost of 90,000. So बेटा ये जो buying and selling होती है ना, if you look at this, ये buying and selling और revaluation like this part, तो हम उसको schedule में treat करेंगे. Likewise ये जो part है तो we'll be using it in schedule. जब हम depreciation का schedule बनाएंगे तो we'll be dealing it there, right? So अभी के लिए I'm just using the data. मशीनरी 1 और 2 तो हमारे पास ऑलरेडी फुली डेप्रिसिएटेड है. सो अगर मैं मशीनरी 3 यहाँ पे ले लेता हूँ, मशीनरी 3, तो बेटा मशीनरी 3 की हमारे पास यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, हाउ मच इज द कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू, ये हमारे पास 12,000 थी. डेप्रिसिएशन का रेट जो था वो 10% था. एंड बेटा ये स्ट्रेट लाइन है तो 8 इयर्स ऑलरेडी ये डेप्रिसिएट हो चुका है. दैट वाज डेप्रिसिएटेड बाय 8 इयर्स. तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा विल बी यूजिंग आवर मैथमेटिकल स्किल्स. अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूं, 10% पर एनम है, 10% पर एनम के हिसाब से अगर वो 8 इयर्स यूज हो चुका है, दैट मीन्स इट हैज बीन यूज्ड और इट हैज बीन डेप्रिसिएटेड जो है बाय 80%. सो 80% इज द डेप्रिसिएशन which has been charged. सो अभी हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू रह गई है, नेट बुक वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी इसकी, मशीनरी 3 की, दैट वाज 12,000, राइट. सो 12,000 इज द नेट बुक वैल्यू जो हमारे पास अब रह गई है. सो बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर 80% जो है हमारा ये एसेट डेप्रिसिएट हो चुका है, सो व्हाट विल बी द परसेंटेज or what will be the value in terms of percentage for this $12,000? Definitely that's going to be 20%. Because अगर आप इक्वेशन को देखें तो cost minus accumulated depreciation equals to net book value, right? सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी कॉस्ट जो है हमने फाइंड करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास जो है वो 80% ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, एंड ये जो नेट बुक वैल्यू मेरे पास रह गई है तो ये कितनी है, डेफिनेटली तो कॉस्ट बेटा हमेशा मेरे पास 100% होती है, 100 माइनस 80%, सो द नेट बुक वैल्यू वुड बी डेफिनेटली 20%, हेंस आई हैव रिटन 20%. सो डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12,000 अगर 12,000 20% है, लेट मी राइट इट हियर, इफ 12,000 equates 20%, how much would be 100%? तो बेटा इसका 100% कितना होगा? So simply 12,000 divided by 20 into 100. That's going to be 60,000. That's going to be 60,000. So 60,000 is going to be the cost for machinery 3. Likewise, इसी पैटर्न पे I can do it for machinery 4 as well. ठीक है, machinery 4 की अगर मैं कैलकुलेशन देखूं, I'll be using the black pen over here, again using the same method. अगर मैं देखूं 10% है and machinery 4 हमारे पास कितने years के लिए थी? If you look at the question, that was for 6 years.
10%, मतलब वो 60% डेप्रिसिएट हो चुकी है भाई, 60%. सो 10 इंटू 60, बल्कि लेट मी राइट इट दिस वे जी. तो बेटा ये हमारे पास 10% था, एंड 10% हमारे पास 6 years जो है, मल्टीप्लाई बाय 6 years तक ये ऑलरेडी यूज हो चुका है. इट मींस दैट हैज बीन डेप्रिसिएटेड अप टिल 60%. सो हाउ मच एम आई लेफ्ट विद? तो बेटा जो इसकी कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? कैरिंग वैल्यू मेरे पास आ रही है 24,000. सो बेटा कैरिंग वैल्यू इज 24,000. सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि ये जो 24,000 है ये कितने परसेंट है? अगेन वी कैन यूज द सेम इक्वेशन. If cost is 100% and the accumulated depreciation is 60%, so how much would be the net book value? This net book value would be 40%. This means this 24,000 is 40%. So again doing the same cross multiplication, if 24,000 equates 40%, how much would be the 100%? So बेटा जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो you'll be having the same figure of 60,000. This is just an additional calculation, right? ये मैं additional कर रहा हूँ. There was no need of doing this calculation. जरूरत नहीं थी. Why? हाँ, उसने क्वेश्चन में कहा था, it said that all machines had a same price. तो बेटा मुझे यहाँ पे सिर्फ मशीनरी 3 की प्राइस भी अगर मैं फाइंड करूँ 60,000, that's gonna enough. That's gonna be enough. 60,000 हमारे पास है, multiplied with 4. So that's going to give you what? That's going to give you a total of 240,000. तो बेटा टोटल 240,000 मेरे पास इसकी कॉस्ट है. मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिख दी 240,000. नेट बुक वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दोनों की गिवन है. नेट बुक वैल्यू मेरे पास कितनी है? नेट बुक वैल्यू एक 24,000 था, एक 12,000 था. तो वी सिंपली add them up. 12 plus 24, that's going to give you what? 36. So it's going to be 36,000, right? So जो हमारे पास कैरिंग वैल्यू थी वो 36,000 थी. देन डेफिनेटली जो है हमारे पास 240,000 minus 36,000, that's going to give us a accumulated depreciation of 204,000. Done? So we are done with this part of it as well. Moving on to the motor vehicles, the final bit of it, I'll be using a blue color for that matter. मोटर व्हीकल्स जो आपका है, मोटर व्हीकल्स के बारे में यहाँ पे कह रहा हूँ, ऑन 1st of July 2022 the motor vehicle had a cost of 250,000. There was no acquisition during the year, but one vehicle with an original cost of 80,000 was sold for 50,000, giving a loss on disposal of 12,000. The accumulated depreciation on 30th June 2023 was known to be 70,160. As I have already told you कि बेटा ये जो acquisition, sale, purchase, disposal, revaluation, इसका ताल्लुक schedule के साथ है. So we'll be using it in schedule. Right now हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैंने उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. सबसे पहले हम देखें तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट इज 250,000. सो वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ कॉस्ट. सो कॉस्ट मैंने यहाँ पे 250,000 लिख ली. ठीक है. अब बेटा कॉमन सेंस से बताएं, 250,000 मेरे पास कॉस्ट है. अगर मैं देखूं तो टिल डेट मेरे पास यहाँ पे कैरिंग वैल्यूज कितनी है? कैरिंग वैल्यूज अगर मैं देखूं तो बेटा मैं यहाँ पे एक्स के थ्रू मैथमेटिकली थोड़ी कैरिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम लोग. कैसे? What was the total value? This 30th June 2022, it showed a carrying value of all the property, plant and equipment at 620,000. So beta total carrying value 620,000 hai. Let me write it here. It's the total carrying value, right? Total carrying value, that is 620,000. टोटल कैरिंग वैल्यू अगर 620,000 है और मैं यहाँ से जो है प्रेमिसेस की एंड मशीनरी की कैरिंग वैल्यू को सेपरेट कर लूँ, सो 620,000 माइनस प्रेमिसेस की कैरिंग वैल्यू ऑफ 408,000 एंड माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ machinery of 36,000. So that's going to give me another carrying value or remainder carrying value of 176,000. So बेटा ये एक एसेट था, ये दूसरा एसेट था. So ये जो मेरे पास रह गया, this is my third asset, which is what? Motor vehicle. So now I have the carrying value of the motor vehicle, which is 176,000. Simple maths, easy peasy. 176,000. So 250,000 minus 176,000, that's going to give you what? That's going to give you a difference of 74,000. And we can have a cross check as well. Cross check हमारे पास कैसे करेंगे? If you can add up all of these, 408 plus 36 plus 176, that's going to total what? 620.